Hi everyone, welcome to VRC with Gaurav. In this video, we are going to solve a philosophy-based practice RC passage. I absolutely love this passage and couldn't resist sharing it with you. I hope that you share the same feeling with me. The more I read this passage, the more and more I've started liking it. So just can't wait for you to come with me and solve this one. All right then, without delay, let's start. Once again, as always in every video, I would recommend that you pause the video here, read the passage, solve it yourself. Please use the timestamps which I've put in the description box as well as the comment section. Click on the timestamps, go to the questions, jot down the answers, then you can revisit, come to the starting point here, and then walk with me through the explanation of the passage as well as the question. Okay, chalo then, without any further delay, let's dive in. Take a look what the passage says. It has actually two parts to the narrative. We'll discuss the first half over here, and then we'll go to the second half. In the first half, we are talking about a particular school of thought, Confucius, very famous philosopher, actually underrated guy. हम जो स्कूल की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वी आर इंट्रोड्यूस टू ग्रीक ओल्ड फिलोसोफर्स लाइक Aristotle, Plato, Socrates, but we are not introduced to philosophy of people like Confucius. Very influential guy. Entire Chinese civilization के at core पर आप कह सकते हो कि a lot of Confucian philosophy lies. ठीक है. So the passage opens with that statement itself that Confucius inspired an entire school of philosophy. And there is this one particular guy who is said to be his most illustrious student, Mencius. So what is Mencius talking about? ठीक है, ये बहुत जगहों पे बेचारा ट्रैवल किया ट्राइंग टू कन्विंस रूलर्स डिफरेंट किंग्स अबाउट हिज थॉट प्रोसेस अबाउट हिज फिलॉसफी बट डिड नॉट फाइंड अ लॉट ऑफ सक्सेस नेवरदलेस ऑथर सेज नहीं देखो इनकी ये बात क्या है जो मेंशियस बातें कर रहे हैं बहुत अच्छी है सो विल गो एंड टेक अ लुक व्हाट इज मिस्टर मेंशियस सेइंग ही सेज दैट देखो यार ह्यूमन नेचर ना इनहेरेंटली अच्छा ही है ठीक है उस टाइम पे एक थॉट प्रोसेस था दैट human nature consists of only evil attitudes, only of evil inclinations. His philosophy was aimed at countering then current theory. मतलब उस टाइम पे एक वाइड एक्सेप्टेंस था पॉपुलर आइडिया ये थी इंसान मतलब ना गंदी बातें ही लेकर पैदा हुआ है दिल में उसके दिल में जहर ही भरा हुआ है बट मेंशियस इज लाइक बॉस प्लीज नहीं ऐसा बात नहीं करना मेरे साथ में आई एम ऑफ द व्यू दैट नो ह्यूमन नेचर इज इनहेरेंटली गुड rather we are born with the capacity to distinguish between right and wrong very massive statement and he says कि चलो ठीक है जब हम बच्चे रहते हैं when we are children we might not have 100% idea of what is acceptable or not but what we are capable of right as children even as children we are capable of feeling shame so बच्चों को बस ये सिखाने की देरी होती है कि shame जो बातों से आपको फील होता है वो बातें acceptable नहीं and what is not acceptable is what we label as wrong. So what Mencius says is you just have to bridge these concepts in the mind of a kid that let's say there is something which brings you shame or maybe something which brings you embarrassment. That embarrassment is something not acceptable और जो चीजें acceptable नहीं है सोसाइटी में उसको हम wrong label कर सकते हैं और बच्चों में तो कैपेसिटी है ही गुड और रॉन्ग को डिफरेंशिएट करने की तो मेंशियस सिंपली इज एडवोकेटिंग ब्रिजिंग दिस गैप बिटवीन द टू कांसेप्ट्स एंड योर जॉब इज डन ठीक है सेकंड पैराग्राफ में भी दिस पार्ट इज एम्फसाइज दैट ही इज नॉट इन अग्रीमेंट विद उस टाइम का वाइडली एक्सेप्टेड थॉट ही सेज कि नहीं देखो आप बोलते हो ना कि इंसान के अंदर बुराई भरी हुई है इविल इंक्लिनेशंस ही है तो मेंशियस सेज कि साथ ही साथ उसके अंदर में अच्छाई भी बहुत ज्यादा है Where is that stated? It is stated over here. He is of the thought process जो कि उसके गुरु कन्फ्यूशियस ने भी बोल कर गए that morality was decreed by heaven. What is meant by it? Let's take a look. That morality was decreed by heaven. The keyword here to keep in mind is the word decree. बहुत अच्छा बहुत interesting word है. It means an announcement, a declaration which has the force of law, which is guaranteed by the government, which is guaranteed by authority. When in childhood you might have heard of some stories कि राजा लोग अनाउंसमेंट करते थे गांव-गांव में खुद के खबरी खुद के मैसेंजर्स भेजकर तो imagine a situation in back in those old days where a king's messenger is going to a village getting down from his horse and then unrolling a scroll and reading something aloud so that action can be called as
decree issue हुई है कि there is a law, new law in the land, there is some new rule, and it is being announced here and there. So the angle of that ghoshna, angle of announcement na, is very prominent in a decree. Where it differs from a particular law is that a law might sit quietly in your law books, legal books. A decree is something जो जाकर आप हैमर करोगे दुनिया में कि देखो ऐसा है, ऐसा कायदा कानून है, something like that. तो चलो ठीक है, यहाँ पर coming back to the discussion, what is Confucius and in return Mencius is also saying is कि morality, meaning the ability to say that okay, something is virtuous, something is good, and the other thing is bad. This capacity is given to us by heaven. हम ये लेकर पैदा हुए हैं, ठीक है? And he is arguing what? He is arguing that morality is as much a part of human nature as selfish appetites. So Mencius is accepting it कि हाँ, इंसान के अंदर शायद सेल्फिश बातें हैं, कुछ इविल बातें वो लेकर आता है, बट साथ ही साथ प्लीज कीप इन माइंड ही सेज कि नहीं, अच्छाई भी है, हमें भगवान नहीं दिया है, हमने ऊपर वाले नहीं दिया है, हेवन नहीं दिया है. ओके, so this takes care of the first half of narrative. Let's go to another point of Mencius, which is very good. बहुत ही अच्छी आइडिया है. He says कि देखो, what is the function of a ruler? What is the function of a king? It is to further the good of his subject. Further करना मतलब बढ़ावा देना. He is saying कि as a king, it is a fundamental job, boss, to improve the lives of your citizens, to improve the life of your subjects. If you're not doing a job properly, then you are just another random fellow and you do not have a divine right to rule. If you're somebody, if you're abusing your power, then please, boss, please exit. You are no longer a ruler. You no longer have God का support. तो ऐसे इंसान के खिलाफ people have the right to rebel against him. Something very revolutionary. ठीक है? You can see that this thought process has been enunciated by philosophers in Eastern cultures way before concepts like this, declaration like this featured in Western philosophy. If you are interested, so please go take a look at Thomas Hobbes का declaration and American Declaration of Independence. उनके अंदर यही बातें की गई है. And we accept those as revolutionary thought process for modern democracy. Oh my God, no boss, ये बातें हमारे ईस्टर्न कल्चर्स में ऑलरेडी हो चुकी है पहले से. ठीक है? So the first couple of paragraphs very appreciative of Mencius and giving us a very pragmatic, very clear idea of where this guy stands with respect to society, mankind, ability to differentiate between good and bad. ठीक है? तो चलो, this takes care of the first half of the entire passage. Now let's go take a look at what the second half says. बहुत ही बढ़िया बात की है. Now we are discussing and comparing three different philosophies with each other. So let's understand what these three philosophies are using a very popular movie example. ठीक है? I try to do this as and when possible. It makes your ability to relate to what is written in a much closer manner. ठीक है? I hope that you have watched the movie Kung Fu Panda. नहीं देखी है तो प्लीज बॉस, प्लीज जाकर देखो. बहुत अच्छी मूवी है. ठीक है? उसके अंदर में यू हैव दिस थ्री कैरेक्टर्स. On one hand, on the left hand side, you can see it's an angry mouse like looking character. ठीक है? It's not a mouse technically, but his name is Master Shifu. ठीक है? Then on the rightmost side, what do you have? You have the lead character, sort of the hero of the movie, who is Po. He's a panda and his name is Po. And बीच में है a legendary guy. He features in the first movie only. इनका नाम है मास्टर उगवे. तो अगर आपने ये मूवी देखी है तो यू विल बी एबल टू रिलेट टू व्हाट इज गोइंग ऑन. बट इवन इफ यू हैव नॉट वॉच्ड द मूवी, प्लीज ट्राई टू बी विथ मी. यू विल बी एबल टू फॉलो व्हाट्स गोइंग ऑन. तो व्हाट द पैराग्राफ सेज, व्हाट द पैसेज सेज इज कि मास्टर शिफू, आप देख सकते हो, उनके शक्ल देख रहे हो, गुस्से में दिख रहा है इंसान, चिड़चिड़ा है. एंड इन द मूवी ऑल्सो हिज रोल, एटलीस्ट इन द फर्स्ट हाफ, है ही इज लाइक क्रेजी अबाउट रूल्स एंड लॉस. ऐसा होता है, वैसा नहीं होता. If you are somebody who is breaking the rule template, I am going to beat the shit out of you. That's his thought process. So Master Shifu का जो thought process है, very rigid about rules. He believes in discipline a lot. He believes in punishment also. If you don't follow what I'm telling you, I'll beat you up. And he literally beats Po up in the movie. So he's like very rigid about discipline. Punishment में भी वो believe करता है. So what is this thought process? This is the thought process of legalism. Okay, legalist philosophy हम इसको कह सकते हैं. ठीक है?
Then on the other hand, you have completely opposite thought process going in the form of Poe. He is like boss, life में चिल मारना है, तुम ना ज्यादा लोड मत लो, बी इजी गोइंग, बी फॉलो योर इंट्यूशन, फॉलो योर गट फीलिंग, बहुत ज्यादा हर जगह लॉजिक मत चिपकाओ यार, ठीक है, बहुत रिजिडली मत रहो, फ्लेक्सिबल रहो लाइफ में, एंजॉय करो, ठीक है, खाओ पियो, मजा नहीं, लाइफ समथिंग लाइक दैट, ओके. एंड देन as a middle ground, you have another philosophy coming in the form of Master Udve. Pretty much balanced, very pragmatic, and you can say he incorporates the best of the two. In the sense कि जो legalist thought process है, उसके जो अच्छे points है वो incorporate हो जाते हैं Confucius philosophy में, and अच्छी बातें जो पो वाले टीम की है, जो टेओइस्ट फिलोसॉफी है, उसकी जो अच्छी बात है, लाइक टेकिंग इट अ बिट इजी इन लाइफ, फॉलोइंग योर इंट्यूशन, नॉट बीइंग सुपर रिजिड, ये सारी अच्छी बातें भी आपके कन्फ्यूशियन फिलोसॉफी में एक्सेप्ट होती है. सो लेट्स लेबल दिस थिंग्स. दिस इज कन्फ्यूशियन फिलोसॉफी. एंड देन यू हैव पो ऑन द अदर हैंड, हु बिलोंग्स टू द टीम, क्या कहेंगे ना इसे, टेओइस्ट फिलोसॉफी. तो एज यू कैन सी, थोड़ा देखकर समझ में आता है कि टेओइज्म एंड लीगलिज्म, शीफू और पो, थोड़ा सा 36 का आंकड़ा तो है यार, इनकी माइंडसेट काफी अपोजिट दिख रहे हैं. एंड इफ यू हैव रियली वॉच्ड द मूवी, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. शुरुआत में लिटरली दोनों कैरेक्टर्स 36 का ही आंकड़ा लेकर बैठे हैं. शीफू मारपीट देना चाहता है पो को, एंड पो इज लाइक, अरे यार ये शीफू तो मेरी बात ही नहीं सुनता, ये तो मेरी रैगिंग ही लेने के लिए पीछे पड़ा है, ठीक है. वेरी वेरी स्ट्रांगली रिकमेंडेड. प्लीज ड्रॉप एवरीथिंग इन दिस मोमेंट. Please stop this video, close this video, and go watch the movie if you haven't. Massive fan. And coincidence of sorts, this movie is based in China, and what we are discussing in this passage is also Chinese philosophy. Confucius is actually a Chinese guy. Okay? Chalo. So I hope that you have got the gist of what we are trying to discuss over here in the third paragraph. We'll discuss it in more detail in the fourth and fifth one. But if you would like to, I would recommend that you pause the video here, jot down these points, ताकि आपको आगे का नैरेटिव भी क्लियर कट हो जाए. ठीक है, तो चलो देन. Okay, so as you can see, I've jotted down the important points of the third, fourth and fifth para, जो legalism, Confucian philosophy और Taoism का. ठीक है, instead of walking you through one by one sentence of each of this paragraph, we can jot down the thought process of all these three philosophies in a concise manner like this. ठीक है, तो आप देख सकते हो ये पॉइंट्स देखने के बाद में that one thing becomes fairly clear कि लीगलिज्म और टेओइज्म का ना एकदम से जमने नहीं वाला है एक दूसरे के साथ में. Because clear cut you have sentences over here which says this कि on one hand you have Taoism which emphasizes what, जबरदस्ती का यार एक्शन मत करो, आप थोड़ा सा शांति से बैठो, डोंट एंगेज इन नीडलेस हसल बसल एंड बिजी वर्क. while on the other hand what is legalism saying, but मैं आपको शांति से नहीं बैठने दूंगा, what we should do is we should always stay active, we should try to modify human behavior for the better. अगर कुछ गंदी बातें हैं इंसान के थॉट प्रोसेस में, इंसान के एक्शंस में, तो तुरंत एक्शन लो, अप्लाई रूल्स, अप्लाई डिसिप्लिन एंड ट्राई टू चेंज ह्यूमन बीइंग्स. वेल टेओइज्म इज लाइक, यार प्लीज ना मेरे ऊपर में जबरदस्ती के कानून कायदे मत लगाओ, मुझे थोड़ा सा जीना है शांति से. ठीक है, सो बेसिकली लीगलिज्म कैन शुड रिमाइंड यू ऑफ मोहब्बतें का ना मिस्टर अमिताभ बच्चन, परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन. आई फॉरगॉट टू इंसर्ट दैट मीम हियर, बट एट दिस मोमेंट seriously I'm regretting it. That is the best way to emphasize what legalism stands for. And then as a middle ground you have Confucianism, which is really very practical. What does Confucianism say? It suggests that thoughtful contemplation is necessary in making decisions. ठीक है, okay. It is also accepting कि देखो यार, मेंटेन करना चाहिए हमारी जो परंपराएं है, बहुत अच्छी बात है, वी शुड मेंटेन ट्रेडिशन, वी शुड ऑल्सो बिहेव अकॉर्डिंग टू अप्रोप्रिएट रिचुअल एंड प्रेसिडेंट. कि थोड़े से तमीज से रहो, हर जगह मनमानी मत लगाओ, कुछ अगर समाज के प्रथाएं, समाज की ट्रेडिशन है तो उसको फॉलो करना चाहिए. बट हाँ, लीगलिज्म जो बोलता है कि तुम फॉलो नहीं करोगे तो मैं आके तुमको धोऊंगा, हैशटैग आदि पुरुष रेफरेंस, तो प्लीज ऐसी बातें नहीं है.
Confucianism is like, please don't be so violent here. Okay, let's behave in a very balanced, very mature manner. That's it. Okay, so I have highlighted the thought process. I've jotted down these points. I would recommend that you also do this paraphrasing if retention is a bit of a problem with you. But if that is not an issue, so let's go and try to tackle the questions. Okay, then. I hope that you have also liked the text of the passage as much as I did. Really, only if all philosophy passages could be so easily readable and relatable like this. But no, yaar, they often give you very abstract stuff here and there, which I generally recommend not going after. ठीक है? Abstract चीजों के पीछे मत जाओ. There is far better scope for you to score with much better accuracy in the rest of the section. ठीक है? चलो. Anyway, let's go to the first question. चलो, मेंसियस की फिलोसॉफी को लेकर में हमारे पास में एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अस्क्राइब्ड टू. अस्क्राइब मतलब आप क्रेडिट दे सकते हो. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्रेडिटेड टू मेंसियस का फिलोसॉफी. ओके ओके, तो चलो लेट्स गो एंड ट्राई टू टैकल द ऑप्शंस. ऑप्शन ए क्या कहता है? इवन व्हेन यंग पीपल आर केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट कॉजेस सोशल डिसग्रेस. यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया. व्हाई? Because what Mencius has said is that right from day 1, day 0 of we are born, we are capable of distinguishing between right and wrong. We are capable of feeling shame. But ये जो gap है कि भैया wrong thing will cause you shame, right thing is acceptable in society, ये थोड़ा सा सिखाना पड़ता है. They have to be taught that, and hence here it has written, once they learn which acts are good and bad, and bad things will cause social disgrace, bad things will cause you shame, ये बात सिखाना बाकी है. तो there is this vagueness over here. In option 8 is saying when young. तो how young are we talking about? 2 साल के बच्चे को भी आप young बोल सकते हो, 7-year-old child को भी young बोल सकते हो. Now the passage is also not emphasized before us कि कौन सी एज में बच्चा ये बात सीख जाता है या आप सिखा सकते हो उसको. What we know is very limited information कि हम क्या कैपेसिटी लेकर पैदा हुए हैं right from day 0. So option A में थोड़ा सा red flag type situation coming in. I am not inclined to select this immediately, but also not immediately reject करने जैसा भी एकदम से कुछ नहीं है. Option B देखते हैं, and thankfully it turns out to be far superior. The capacity to differentiate between right and wrong is inherent in human nature. Absolutely bang on point. Word to word it is given over here. We are born with the capacity to distinguish between right and wrong. 100% correct. No need to delve much more into it. ठीक है? So A में जो थोड़ा सा रेड फ्लैग दिख रहा था, अब लोड लेने की बात नहीं. ऑप्शन बी मेक्स द जॉब स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर यू. ठीक है, चलो आगे जाते हैं. ऑप्शन सी, पीपल आर केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज राइट फॉर देम. अरे यार, डोंट यू थिंक दिस हैज सेल्फिश अंडरटोन्स? खुद के लिए क्या सही है ये समझ जाता है, इतने सेल्फिश नहीं है हम. ऑथर से मेंशियस से राइट और रॉन्ग दोनों की अच्छी परख है. तो सी नहीं यार बॉस, सॉरी. D, human tendencies should be held in check according to heavenly decrees. Now you might be a bit confused because of this sentence over here, that morality was decreed by heaven. Mencius broke down the barrier between human tendency and heavenly decrees. ये वाला जो सेंटेंस जिसके ऊपर आई एम मूविंग माय लेजर पॉइंटर राइट नाउ, इस सेंटेंस को इंटरप्रेट करो आप कि देयर वर पीपल हु आर सेइंग कि ह्यूमन टेंडेंसीज आर डिफरेंट. हेवन जो बोलता है, भगवान जो कहते हैं, जो पुण्य की बातें हैं वो अलग है, इनके बीच में बहुत बड़ा बैरियर है. मेंशियस इज लाइक हट चुप, ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज इंटरसेक्शन बिटवीन दैट. बट व्हाट इज ऑप्शन डी से? डी इज लाइक मेंशियस के दुश्मन जो बात करते होंगे ना, वैसी बातें की है ऑप्शन डी में, कि इंसान की टेंडेंसीज के ऊपर में हेवनली कानून कायदा अप्लाई होना चाहिए, इंसान को कंट्रोल करो, ये कमीना है. पार्डन माय लैंग्वेज, स्लिप ऑफ टंग, बट यस, option D has such harsh tones. इसलिए option D should also not be accepted. It is not in line with Mencius. Okay, so I hope that this option is clear to you. This question is also 100% clear. Still, if any doubts, please drop them in the comment section. Okay, let's go to the second question now. Let me clear the screen for you. Okay, what does the question say? Based on information, which of the following is the author likely to agree with? ठीक है जी, क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन. लेट्स गो हंट इन. अभी ऑथर का अग्रीमेंट देखा जाए तो ऑथर ना 100% क्लियर नहीं हो रहा है वेदर ऑथर इज टेओइज्म गाय और इज ही लीगलिज्म गाय.
largely it feels like he is a Confucianism guy, because what he has done is clear cut Confucianism की पॉजिटिव ही बातें की है उसने. देखो आप अगर फोर्थ और फिफ्थ पैरा अच्छे से पढ़ो तो you'll be able to come to a realization that he has given the pros and cons of Taoism, pros and cons of legalism also, but he is giving us only pros and pros of Confucian thought process. तो चलो ठीक है, देखते हैं ऑप्शन कौन सा मैच करता है. ऑप्शन ए, Wu Wei and Wu Yu are two opposite ends of spectrum of philosophies. Now this cannot be said with 100% guarantee. What is given to us is here कि Wu Wei enlightened non-action. ठीक है, तो maybe Wu Wei is some philosophy which emphasizes थोड़ा सा non-action, या फिर Wu Wei अगर आपके दिमाग में है, आप उस thought process वाले हो, तो maybe you are somebody who believes in taking it a bit easy, not being जबरदस्ती का active all the time. While on the other hand, you have some vague understanding of who you active attempt कि नहीं तुम जाके कुछ करो, अगर कोई चीज खराब दिख रही है तो प्लीज यू गो अहेड, यू रेक्टिफाई व्हाट इज रॉन्ग आउट देयर. तो ये seems like they are opposite, but please keep in mind this is very limited information that we are acting on. Now whether the author will agree to such a definitive, such a deterministic statement seems pretty unclear right now. So while we can't reject it outright, we cannot even accept it immediately. So that's why we go to option B. What does B say? Taoist philosophy, okay, emphasizes working towards enlightenment. अरे ये कहाँ बोला है? Second half is okay, rather than being involved in mundane activities. Yes, it is given over here कि जबरदस्ती का busy work for its own sake is not cool. Avoid needless hustle bustle. So yes, that part is clear cut. Second half is okay, but working towards enlightenment नहीं बोला है. Let's take a look. What does it say? Taoism emphasizes non-action. Please do not confuse it with this word Wu Wei enlightened. So Wu Wei enlightened is equal to enlightenment. ऐसा कुछ नहीं होता. Rather, to make option B correct, it should be changed to something like working towards mindful non-action. अगर ऐसा चेंज आ जाए इसमें तो फिर ऑप्शन बी का स्टेटमेंट इज समथिंग ट्रू. माइंडफुल नॉन एक्शन, सोच समझ कर. ऐसा भी नहीं है कि आप लेजी बैठे रहो घर पे, सोचो थोड़ा सा वेदर योर इंटरवेंशन इज नेसेसरी और नॉट. But option B, as you can see, is completely going in a random different direction. Hence, we will not accept it. We can throw it out immediately. C. Confucianism maintains a middle ground. बहुत appropriate, बहुत अच्छा, ठीक है. While Taoism and legalism are incompatible with each other. Okay. पढ़कर ऑप्शन सी डेफिनेटली अच्छा लगता है, क्योंकि हमने देखा है कि टेओइज्म इज लाइक यार प्लीज लाइफ में थोड़ा चिल लेते हैं. We don't want to be boxed by rules. We want to avoid being constrained by rules. And on the other hand, what you have is legalism, which is like parampara, pratishtha, anushasan every single time. Adhere strictly to rules and custom. Legalist philosophy, nahi, कानून कायदे ही सब कुछ है. So in a way, yes, we can say that, okay, yes, author might agree with this, that Taoism and legalism fairly incompatible with each other. Okay, so far no major issues with option C. बट हियर द प्रॉब्लम अराइजेस कि ऑप्शन डी ने गलत थोड़ी बात की है कुछ. ऑप्शन डी क्या कहता है? टेओइस्ट फिलोसॉफी प्लेसेस एन एम्फोसिस ऑन इंस्टिंक्ट. यस, वेयर इज दिस रिटन? कम विथ मी. let's use some color for this. Taoist philosophy, let's use blue. ठीक है. what does it require? टेओइस्ट नोशन क्या कहता है कि आपके अंदर जो पुण्य वाली बातें हैं, they should be almost instinctive. Once again over here, Taoist philosophy encourages intuitive thought process. Intuition आपको encourage करता है वो, ठीक है. So this part is all right. Taoist philosophy places emphasis on instinct, ठीक है. चलो. On the other hand, what we have in the form of legalism, legalism wants to modify human behavior in its set form. Correct. This is given to us. I'm highlighting it once again for you. Legalism emphasizes चेंज करो ह्यूमन बिहेवियर को बाय अप्लाइंग रूल्स, कस्टम्स, बाय रिस्ट्रेनिंग गंदी बातें आपके अंदर की. तो ऑप्शन डी इज आल्सो सही ना. तो दिस क्रिएट्स अ मैसिव डायलेमा फॉर अस इन द सेंस that C and D both are in line what the author has given to us in the passage. Official answer, I'll tell you, it has been given only as option C, but I agree with option C. But my counter question is, option D में क्या गलती है बॉस?
गलत थोड़ी कुछ लिखा है. Why will the author not agree with it? He will agree with it as much as option C. So this is a case where you are torn between two options and really there are no red flags in either C and D. चलो ऑप्शन ए में तो भी वेगनेस है इसलिए उसको किक आउट कर दिया. तो माय वर्डिक्ट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, यू शुड स्किप इट, यू शुड हैव लेफ्ट इट. अगर आपका आंसर सी या डी में से एक है, अच्छी बात है, इट्स अ गुड थिंग, बट यू शुड ऑलवेज बी अवेयर वेदर अदर ऑप्शंस आर गुड इनफ और नॉट. ठीक है, तो प्लीज अवॉइड negative marking scenarios like this. And unfortunately these things happen in CAT exam also. ऐसा नहीं है कि वहां पर आपको 100% क्लैरिटी वाले ऑप्शन मिल ही जाएंगे. Sometimes those guys also mess up like this where two options are really way too close to each other. Anyway, let's go to the third question now. What is the question asking? Which one of the following may be seen as a characteristic of Taoism? ठीक है, पो की टीम, थोड़ा सा लाइट लो यार लाइफ में. And very luckily, we have the answer option right as the first one. First, Taoism thinkers reject bombastic and flatulent words. Now, first of all, for a majority of aspirants who may have gone through the passage or maybe even skimmed through it, and अगर आप ऐसे टाइम पे skimming करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, तो what happens is that you end up rejecting option A, thinking कि अरे bombastic and flatulent nowhere mentioned, चलो चलो bye bye, option A kicked out, BCD में ही कोई आंसर होगा. But boss, this is where the threat, the dangers of skimming through the passage arise. क्योंकि what is the passage telling us? Very last line over here, please take a look at here. Taoist philosophers are saying हमको भारी भरकम words नहीं चाहिए. Okay, don't give us hollow words. We are going to rely on intuition. We are going to rely on inherent good virtues in any human being. तो इसका मतलब क्या है? बड़ी बड़ी बातें मत करो, खाली बातें मत करो. Don't speak hollow. Have substance in your life. And bombastic and flatulent का meaning ये होता है that there is no substance inside, it is just gaseous. Flatulent is actually a term that we use when we are suffering from bloating and having gases because of indigestion. ठीक है, so flatulent and bombastic meaning बड़ी बड़ी बातें, but there is no solid foundation present. Option B, C, D, you can immediately throw them out because they are exactly going opposite of what Taoism implies. For example, option D I'll help you out with. Intuition undermines human behavior. Absolutely opposite. Undermine का meaning होता है weaken करना. No, rather Taoism guys are like कि intuition should be emphasized in human behavior, should be promoted in human behavior. और ये कहता है कि नहीं, इंट्यूशन तो कमजोर करता है ह्यूमन बिहेवियर को. हट, आउट आउट आउट. ठीक है, so I hope that this question is clear to you. Very straightforward database question, but you would be able to get it only if you have read the passage properly. Skimming किया, classic example, you will go down the drain here. ठीक है, चलो let's go to the next one. Last question, very straightforward. All of the following can be inferred except, मतलब three options you will have something जो आप पैसेज पढ़कर ट्रू बोल सकते हो, करेक्ट बोल सकते हो. वन ऑप्शन यू विल बी लाइक मैं नो, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर. ठीक है, चलो ऑप्शन ए, मेंशियस फेल्ट दैट अ रूलर शुड एंश्योर द बेटरमेंट ऑफ लिविंग कंडीशंस ऑफ द पीपल. बहुत बढ़िया, 100% इट इज गिवन टू अस. वेयर एग्जैक्टली? लेट्स गो टेक अ लुक. द फंक्शन ऑफ अ रूलर is to further the good of his subjects. है दिया हुआ, 100% given. Yes, it is, it can be inferred, hence not the answer. Option B, Confucius felt what? Morality was dictated by divine beings. Divine beings अब रहते कहाँ है? ये रहते हैं heaven में. Yes, morality was decreed by heaven. Correct, given. और Confucius का ये thought process है. So option B can also be inferred. So bye bye sir. ऑप्शन सी इज द आंसर. क्यों? क्योंकि इसका फर्स्ट हाफ ठीक है बट सेकंड हाफ बहुत घटिया है. फर्स्ट हाफ क्या कहता है? Mencius felt that even children can distinguish between good and evil. Yes, yes, he has given to us here that all of us are born with the capacity to distinguish between right and wrong. We can understand what's good and what's bad. But problem इसमें कहा आ गई, some of them have the option of following the path of evil. Horrible. कहा लिखा है ये? Where is Mencius saying anything like this कि अच्छा बेटा तुमको समझता है ना अच्छा बुरा क्या है, ठीक है, इसलिए अब तुम जाओ बुरे की राह पर तुम चल सकते हो. Horrible boss, please no. ठीक है, ऑप्शन डी, लेट्स टेक अ लुक. दैट कैन आल्सो बी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्फर्ड.
Confucianism promotes importance of analysis when taking a decision. Bang on point given over here. कहा दिया है ये part. Confucianism, last paragraph, I'm moving my highlighter once again over it, suggests that thoughtful contemplation is necessary in making decisions. Straightforward verbatim written over here in option D, hence can be inferred, hence not the answer. Okay? So with this, I hope that you enjoyed the passage. Also got 3 on 4 or 4 on 4, all questions correct, except that minor glitch that we had in the second question. But other than that, very pretty passage, a fun read. If you have been watching the video till now, thank you so much for your time. Please like, share, and subscribe. Please share it with your fellow CAT aspirant friends. Helps and encourages me a lot. Till then, tata, bye-bye. Thank you. Take care, and I'll see you in the next one.